Hello. Anji, good morning, everybody. Uh, Today I'm discuss the topic waste elimination. Waste is anything which does not add value to product or service in any activity, whether manufacturing or non-manufacturing. Waste exists as two major types: obvious waste and hidden waste. This system in which any manufacturing wastage and any other non-manufacturing wastage are discussed. First point is obvious waste is easily recognizable. Some example include scrap, rework, undisciplined meeting, excessive paperwork system, working ahead of schedule, doing more than required and excessive energy consumption. And second is hidden waste refer to work which is necessary under current method of operation but could be eliminated if improved method were adopted. Some examples include poor design, repair loops, waste handling and treatment facilities. Then buffer banks, poor layout, excess overtime and excess labor. Uh, and this diagram are show to seven wastes of production. First, overproduction. Second, transportation. Third, motion. Fourth, waiting. Fifth, processing. Sixth, inventory. And last is defect. Most quality effort focus on two things: quality control based on standard and inspection, and control quality prevention based on techniques such as error proofing. Most people do not realize the effect that the overall manufacturing system and has on quality. First, just examine the seven types of waste and their impact of quality. First is overproduction. Overproduction means product demand is less and my productive production is high, in which providing a product or service before or in greater quantity than the customer require prevent a early detection of defect and subsequently embed the defect in every product until it is detected. Then second is transportation. Transportation in which items be moved incur a cost if it is only the energy need to initiate the movement, such as electricity absorbed by fork lift truck. Of course, movement bring another cost which is less visible. What more significant, managing a factory with operations spread apart of much difficult than when the stages are adjusted to one another. These systems are used to transfer the product of industry to customer, in which more defect of transportation. Uh, then third is motion. On related note, people spending time moving around the plant is equally wasteful. The time a machine operator or fitter and waste walking to the tool room of stores of fixture of component could be far better utilized if our plant layout of housekeeping where
geared around having everything that is required close to hand. Then fourth point is waiting time not being used effectively in a waste. We are incurring the cost of waste and all the fixed cost of rent, rate, lighting, heating. So we should use every minute of everyday productivity. Looked at reason for machines of operator being underutilized and set about addressing them all. Thus, we have learned about preventive maintenance and the creation of flow through our factories, which are emphasis of tuck time, the rate at which is component of product move to the next stage. Uh, this system are used to operations are divided to equal time and uh, in which decide the total time consumable of the complete product. Then in which fifth point is innovate processing, following tighter specifications, simply providing more than the customer want to order to satisfy form, fit and function. आगे requirement कितनी है, function requirement, utility and more complexity and more variation to process, both of which led to more chance for error. The most obvious example of integrative processing from my own experience relates to surface finish that required component to be moved to grinder of completion when in fact with such finisher served no purpose. And sixth point is inventory. Inventory in which excess inventory, either is finished good, work in process, delay the detection of defect, in fact, foster the storage of undetected defect. Often the quality problem is not found until the product reaches the customer. Then you have to go back through your inventory to detect where the detect organized weeks, even months after the detect defect first occurred. Then last point is defect, the simplest form of waste in components of product that do not meet the specification. We all know about the Japanese carrying use with their target of single finger reject rate when we released that the mere in part per million and the 1% effect gave the figure of 10 of course. The key point of Japanese quality achievement came with the switch from quality control or quality insurance FRD voted to getting the process right there rather than inspecting the result. Then these 7 points are waste of production, hmm, then waste elimination in the manufacturing environment usually throughout of a term of cost reduction can have the dramatic positive impact of improving quality, waste minimization, invest implemented using the structural sequential approach which recognize that loss elimination provide the greatest benefit and disposal of utility, the least desirable option, and the analysis allow the understanding of the fundamental process which govern waste generation in other words in address to the cause not to symptom in which structured and sequential approach to waste minimization. This diagram was show to uh, every process, every operation. Then my purpose is uh, minimum waste of material. Then in which diagram to first uh, in scale type diagram in which modeling different points are clear. Uh, Modeling and prediction of waste auditing
scheduling and utilization, analysis, site surveying, process design, mechanical engineering, control and automation, and effluent treatment technology. Then next is uh, predict based, identify source and prevent losses, recover and treat. Then final is my purpose to minimum waste is the material. Then the important step in waste elimination is first to predict and identify the waste and its source. This can be done by waste auditing, modeling, site, surveying, process, design. इस सिस्टम में क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम एक ऑडिटिंग करेंगे जो हमारे पास वेस्टिंग हमारे मटेरियल की होगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमने एक कोई डिजाइन तैयार करना है, मॉडल तैयार करना है, उसके बारे में हम देखेंगे कि या हमारे जो कंपैरिजन हमारे प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अवेलेबल है, तो हमारा डिजाइन उनसे क्या डिफरेंस है, इनसे बेनिफिट आगे कस्टमर को बेनिफिट क्या होगा, वो चीज़ें सारी हम इसमें कलेक्ट करेंगे। तो सेकंड होता है साइट सर्वे। आगे हम देखेंगे कि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से सर्वे करेंगे कि कस्टमर की डिमांड क्या है, क्या उनको चाहिए, जो पुराना प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसमें कौन सा डिफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से वो कस्टमर उसे सेटिस्फाई नहीं। तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उस डिफेक्ट को दूर करके कस्टमर को सेटिस्फाई करें ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजली वो यूज कर सके। Then adoption of top-down approach has enabled us to design and validate the various low waste plant. Typically, wastage may be reduced at source by optimizing engineering design, improving control, automation. In addition, product recovery system allow the use of waste material, thereby cutting both loss and effluent by integrating waste minimization. Then now how into the design process we can help manufacturing achieve large reduction in loss. अगर हमारा डिज़ाइन हम पहले डिज़ाइन अपना चेक करेंगे भी हमारा डिज़ाइन कैसा है, ताकि ऐसा डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे हम बनाएंगे ताकि हमारी जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, हमें उस चीज़ का लॉस कम हो। अब इसी तो आगे हमने ये डायग्राम बनाई है, टॉप डाउन अप्रोच फॉर वेस्ट एलिमिनेशन। फर्स्ट एलिमिनेशन हो गया, सेकंड रिडक्शन एट सोर्स, रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। Then to enable waste reduction at existing plant, a range of surveys aimed at analyzing and optimizing process performance are available. Reduction in wastage may be achieved by alternating process operation, rectifying malfunctioning, and improving plant design. Then design provide the most effective means for reducing waste. In this food, dairy, and beverage sector, much effort have been applied to detailed process and mechanical design, include simple equipment, sizing, piping, insulation। इनमें क्या है, हम ऐसी डिजाइनिंग तैयार करेंगे जो आगे हमने प्रोडक्ट बनाना है, जहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसकी ऐसी डिजाइनिंग हम तैयार करेंगे ताकि जो उसका साइज इक्विपमेंट हो वो बढ़िया हो, उसको मैं इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़िया हो, वहाँ पे जो इसे हमने कंप्लीट करना है वो लिटरली डिजाइन हैज आल्सो बीन recognized as an important part of overall process. Three distinct stages may be identified. First is the concept design, second is engineering design, third is detailed design. First, to achieve minimum losses, design engineering must maintain a focus on waste reduction throughout each of these phases. These systems are used to loss wastage of material is minimal.
my motive, my in which इसमें क्या है, जैसे हमारा मोटिव होना चाहिए, हमारा जो गोल होना चाहिए भी, हमने जो डिजाइन तैयार किया है उसकी मेंटेनेंस इजी हो, और उसकी वेस्टेज जो हमने डिजाइन किया है रॉ मटेरियल से लेके हम प्रोडक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो हमारी जो वेस्टेज है वो उसमें ऐसा डिजाइन तैयार होना चाहिए जिससे हमारी वेस्टेज कॉस्ट कम हो। अब कंस्ट्रक्शनल डिजाइन इसमें क्या है, सबसे पहले दिस स्टेज इज जस्ट द स्टार्टिंग एंड एम ऑफ कॉलिंग। इसमें क्या है, प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट टाइप, प्लांट कैपेसिटी एंड वेस्ट मिनिमाइजेशन, these are most important point, fourth point in this industry, in which uh, in this stage various product type and their range and discuss plant capacity is studied, and the solution to the problem of waste is discussed, and various waste minimization techniques are developed and implemented. All these factories and problems are analyzed using the following method techniques: flow sheet, approximate mass balance, third is process technology. इसमें क्या करते हैं हम, अदर कंपनीज के कंपनी के साथ, अदर इंडस्ट्री के साथ जो हमारे कंपेयर हमको अपोजिट हमारे जो काम कर रहे हैं, जो उसके कंपैरिजन और प्रोडक्ट इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, तो उनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं कि जो हमने मेथड लगाया, टेक्निक लगाई है, वो सही है या गलत है। हम वहाँ जो हम नॉर्मल जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, हमें उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, या जो हमारे जो अपोजिट प्रोडक्ट कंप्लीट बना रहे हैं उन पे ज़्यादा। तो वो चीज़ें चेक करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट इज फ्लो शीट, सेकंड इज अप्रोक्सीमेट मास बैलेंस, एंड थर्ड इज प्रोसेस टेक्नोलॉजी। देन इंजीनियरिंग डिजाइन, this is the most important. This is the next step, or we can say this stage comes after implementational design stage and aim at the following. First is flow sheet, process technology, automation, utilization. Next is cleaning requirement and waste minimization. Then first is first point is flow sheet, process technology. Then जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाना है, उसमें जो उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए ताकि उस पर हमारा एम ये होना चाहिए तो वो बढ़िया हो, टेक्नोलॉजी बढ़िया हो, ऑटोमेशन वर्किंग उसकी बढ़िया हो, यूटिलाइज हम उसे इजी कर सकें, क्लीनिंग रिक्वायरमेंट जो उसमें क्लीनिंग हो, हम रिक्वायरमेंट वो बढ़िया होनी चाहिए, वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए। So in this stage, the proceed of first stage is continued and some extra objective and laid down like automation, utilization. As the name suggests, this stage is performed functional by some technology like engineer. They assemble and discuss and find the proportional solution to some problem like cleaning, requirement, and waste minimization. They also study and analyze the flow sheet and process technology carried by the conceptual design stage. At this level stage, following method techniques are used. First one is line diagrams, second is control philosophy, third is equipment selection, and fourth is automation product. And next is detailed design. This is the next and last step, or we can say this stage come after engineering design stage and is final stage and aim of the following. First point is equipment selection, second is control philosophy, third is instrumentation requirement, fourth is layout requirement, and fifth is waste minimization. In this stage, the procedure
Of second stage is continue and some extra objectives are laid on the instrumentation and layout requirement. As the name suggests, this stage is performed functional in detail. Consider all the factor and parameter, and this level stage following method techniques are used. First is layout diagram, second is mechanical design, third is electrical design, fourth is P and ID, and fifth is software specification. अब इसमें क्या होगा, लेआउट डायग्राम हमने एक सबसे पहले अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट की है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लेआउट डायग्राम बनाएंगे कि हमने जहाँ से प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, आगे जो चेन सिस्टम के थ्रू काम चलेगा, जैसे एक ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड थर्ड फोर्थ, हमको चार मशीन यूज कर रहे हैं, उसमें तो अलग अलग ऑपरेशन होंगे, वो ऐसे लेआउट उसकी एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, जिससे क्या हम इजी उससे आगे प्रोसेस टू प्रोसेस ऑपरेशन टू ऑपरेशन आगे मूव करते हैं। सेकंड होता है मैकेनिकल डिजाइन। मैकेनिकल डिजाइन में क्या है जो उसको मैकेनिकल ऑपरेशन होंगे, जैसे कोई हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे हमने सबसे पहले उसके फिनिशिंग करनी है या उसको थ्रेडिंग वगैरह करनी है, वो सारी एक प्रोसीजर वाइज स्टेप टू स्टेप होना चाहिए सारा। तो थर्ड होता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन। इलेक्ट्रिकल डिजाइन में क्या है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी हमने हमको मशीन को प्रोवाइड करवानी है, वो इसका प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए, वो भी हमें एक डिजाइन करना पड़ेगा कि कल को अगर एक ही जगह हमारे को फर्क पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो उससे क्या हो कि हमारा जो टोटल हमारा जो काम चल रहा है उसको उस चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे उसका तो सेकंड ऑप्शन वहाँ पे हमें रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कोई फर्क इलेक्ट्रिसिटी में पड़ रहा है तो हम उसे चेंज करके अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, हमने जो जो फाइनल हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, उसमें कोई इस चीज़ का फर्क ना पड़े। उसके आगे होता है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में हमें एक कुछ जैसे न्यू टेक्नोलॉजी अभी न्यू टेक्नोलॉजी में क्या है, हम सीएनसी मशीन एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमने एक सॉफ्टवेयर है उसमें हम प्रोग्राम फीड किया, प्रोग्राम फीड करने के बाद हम क्या करते हैं, आगे वो हमारा ऑपरेशन हमने फीड कर दिया, वो ऑपरेशन टू ऑपरेशन उस पर काम होते रहेंगे। लास्ट में हमें जो हमें फाइनल डिजाइन फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, कितनी क्वालिटी चाहिए, वो सारा हमें प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट होके हमारे पास प्रोवाइड हो जाए। ऐसे ही इन ऑल द वर्क दिस इज वन थिंग इन कॉमन, the main of waste minimization. Waste minimization means more production. Therefore, more and more industries are aiming for this. So, this तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वर्कर इन्वॉल्वमेंट टू रेस्टोरेंट।